Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. My name is Shahbanu Sabah and it's fifth lecture of maths. Six and six as it is. सिक्स के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिक्स को एज इट इज आंसर में उतार देंगे. ठीक है, देन आंसर विल बी 6,52,142. Now next question is write vertically and subtract. वर्टिकली उतारने का मतलब है कि आपने नंबर्स को ऊपर नीचे उतार देना है. जो क्वेश्चन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक ही लाइन में आपको दिया हुआ है, तो एक ही लाइन में तो हम माइनस नहीं कर सकते इतना लार्ज नंबर. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको वर्टिकली उतारेंगे. वर्टिकली मीन्स आपने दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे उतारना है. ठीक है, फर्स्ट नंबर वी राइट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वी राइट सेकंड or under the first number. Okay, then we have to subtract it and start from right side or ones column. Here we have subtract 5 from 0. Can we subtract 5 from 0? No, because 0 is less than 5. 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 0 जो है वो 5 से छोटा है. तो फिर हम क्या करें, what should we do? Then we will give one borrow from the next number to this number. तो फिर हम नेक्स्ट नंबर से वन बोरो इस नंबर को देंगे ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए. अंडरस्टैंड? And look at the next number. This is also 0. Can you give one borrow from 0? No, because 0 has no value. हम 0 में से बोरो नहीं दे सकते इसलिए कि 0 के पास तो खुद कुछ नहीं है. ठीक है, तो then what should we do? अब क्या करें, अब हमें पहले इस 0 को कैरी देना होगा. इस 0 को हम बोरो देंगे नेक्स्ट नंबर से. जब ये 10 बन जाएगा फिर हम 10 में से 1 बोरो इस 0 को देंगे. ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट नंबर देखें तो वो भी 0 है, उसका नेक्स्ट नंबर देखें तो वो भी 0 है. तो क्या करें, फिर सबसे पहले हमें इस 0 को कैरी देना होगा. हम 5 से 1 बोरो इस 0 को देंगे. ठीक है, when we give 1 borrow from 5 to the previous 0, 0 will become 10 and 5 will become 4. Then we will give from 1 borrow from 10 to the previous 0. Previous 0 will become 10 and the next 0 will become 9. Again we will give 1 borrow from this 10 to the previous 0. 0 will become 9 and 10 will become 0 will become 10 and 10 will become 9. Again we will give 1 borrow from this 0 to the previous 0. 0 will become 10 and 10 will become 9. Then we start our subtraction from the ones. Now we have 10 minus 5 and we can subtract 5 from 10. 10 minus 5 equals to 5. Here we have 9. So we will subtract 5 from 9. 9 minus 5 equals to
4. And here 9 minus 2 equals to 7. Here also we have 9. So 9 minus 5 equals to 4. And here we have 4. 4 minus 2 equals to 2. And 7 minus 1 equals to 6. The answer will be 624,745. Now the question number 9 is subtract 100 from each number. What is the meaning of each number? यानी हमें हर नंबर में से जितने भी क्वेश्चंस में आप नंबर आपको दिए हुए हैं उन सब नंबर्स में से आपने क्या माइनस करना है? 100 को माइनस करना है। आपने हर नंबर में से 100 माइनस कर देना, यानी 100 लेस कर देना। ठीक है, सो to subtract 100 from each number, we will write number first and then we write 100 under the first number and start from ones column. Then we subtract it. 2 minus 0 equals to 2. 2 में से 0 माइनस करें मीन्स कुछ भी आपने माइनस नहीं किया, तो क्या बाकी बचा? 2. नेक्स्ट 5 minus 0 equals to 5. 9 minus 1 equals to 8. Then 6 as it is, 4 as it is, and 1 as it is. Now the answer is 1,46,852. Look at the another example. We have subtract 100 from 500,000. So we will write 500,000 first and write 100 under the 500,000 and start from ones column. 0 minus 0 equals to 0. Again 0 minus 0 equals to 0, and in hundreds column we have 0 minus 1. Can we subtract 1 from 0? No, because 0 is less than 1. 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो हम इसमें से 1 माइनस नहीं कर सकते. Then what should we do? क्या करें? We will give 1 borrow from the next number to this 0. हमें next number से 1 borrow लेकर इसको देना होगा ताकि ये बड़ा नंबर बन जाए. ठीक है. Now look at the next number, that is also is 0, and we cannot give 1 borrow from 0 because 0 has no value. So we will give 1 borrow from the next number to this 0 first. And the next number is also 0. So we have to give 1 borrow from 5 to this 0 first. When we give 1 borrow from 5 to this 0, 0 will become 10 and 5 will become 4. Now we will give 1 borrow from 10 to the previous 0. This 0 will become 10 and this 10 will become 9. Again we will give 1 borrow from this 0 to this 10 to the previous 0. This 0 will become 10 and this 10 will become 9. Now we can subtract 1 from 10, and 10 minus 1 equals to 9. Then 9 as it is, 9 as it is, and here we have 4, so 4 as it is. The answer will be 499,900. Students, question number 10 is same as question number 9. In question number 9, we have subtract 10 from each number, but in question number 10, we have to subtract
500 from each number. So we will write 500 in place of 100. Okay, students? Now, this is your home task. Question number 1 is solve question number 7, 8, 9 and 10 in your copy. And question number 2 is do fill in the blanks and true false. And question number 3 in your book. Okay, Allah Hafiz.